Good morning, everyone. I'm Monica Khanna. I'm an education consultant and heading group of schools in Gurgaon itself. Today, we're going to be breaking a lot of myths regarding laser. And for that, we have Dr. Ruben from CK Birla Gurgaon. I'm Dr. Ruben Bhasin Pasi, consultant dermatologist and cosmetologist at CK Birla Hospital, Gurgaon. So, hi, ma'am. You know what? There are a lot of stories and misconceptions behind laser. So, I wanted to ask you the first question. Firstly, is it laser reduction or is it laser removal? So, this is the most asked question, Monica. It's always laser hair reduction. So, there are these certain cells in your skin that we are wanting to kill so that the end result is a fine, patchy hair. In a living body, we cannot kill certain cells, right? I mean, forever. So that's why it's always known as laser hair reduction, because the end point is a soft, patchy hair growth which comes after number of sessions. So, like for example, for myself, I booked around 6 sessions. Like Okay. you asked me to do that, and generally people do suggest 6 sessions. Is it more required after that? What is it generally? Is it for everyone, or is it only for me that you advised? 6 sessions. Okay. So when I talk about laser hair reduction, it happens in sessions. It's Okay. not like a one-time procedure that you come today, we're going to use some machine and it's going to go forever. Every time that you come, there is a number of fluents that is given to the patient. And that kills the stem cells. Now, what are these cells? These are the cells which make the hair. Something like suppose if I'm garam, like heat kar rahe हाँ hain जी. to in number of cells, they start getting killed. So suppose एक आप इमेजिन करो एक बास्केट है दैट हैज 30 सेल्स नाउ इट हैज 15 सेल्स राइट तो जो हेयर बनेगा इट्स गोइंग टू बी फाइन पैची हेयर राइट सो दैट्स हाउ इट हैपेंस इन सेशंस सो सपोज सेशन नंबर 1 हम एक एक्स नंबर ऑफ फ्लुएंस दिया उसके बाद हम फ्लुएंस इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे दैट डिपेंड्स but yes, coming back to your question, minimally 6 sessions are required for everybody. Okay. Number of sessions also depends on any hormonal disruptance, any issues happening with the patient. Some expectations are more, majorly with the face. That कुछ patients अपने face पे hair tolerate नहीं कर सकते हैं. So they need more of maintenance sessions. Correct. That happens once in 3 to 6 months. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में भी मुझे लगता था देर इज़ अ लिटिल पैच एंड यू हेल्प मी कि इट्स नॉट अबाउट द स्किन इट इज़ अबाउट द हाँ एयर जी. विच आई हैव ऑल्सो सीन अ चेंज इन मी गेटिंग इट बट डू पीपल ऑल्सो बिकॉज देर आर लिटिल मिसकनसेप्शंस रिगार्डिंग दैट कि स्किन तो नहीं खराब हो जाएगी या कुछ ऐसे कुछ डेड तो नहीं हो जाएगा स्किन ड्राई तो नहीं हो जाएगी व्हाट अबाउट दोज मिसकनसेप्शंस बिकॉज पीपल डू टॉक अबाउट इट डरते हैं लोग जनरली ना लेजर कराने से कोई Agreed. एकदम से नहीं जाता हाँ. So, Monica, number one, the technology that I am using is triple wavelength. Okay. उसमें एक नहीं है 3 wavelengths हैं, right? So, number one, the type of hair that अभी हम cater कर रहे हैं वो fine भी है, thick भी है, already laced hair भी है, because like you know, आजकल आपके पास बहुत सारे options हैं, right? जी. So everybody has experienced some form of laser hair reduction somewhere. करेक्ट The fluence that is minimal is 755 with my machine. ओके 755 nanometers is the fluence. मतलब the heating potential that will heat your skin. उससे डीप वो जा ही नहीं रहा है सो इट्स नॉट एंटरिंग योर सिस्टम इट्स नॉट एंटरिंग एक्चुअली आपकी स्किन के डीपर लेयर्स तक भी नहीं जा रहा है वो राइट वो आपका जो एक सिबेशियस ग्लैंड है या जो आपका हेयर फॉलिकल है वो वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि उसने वहीं पे सेल्स में काम करना है राइट सो इट्स नॉट एंटरिंग योर सिस्टम नंबर 1 नंबर 2 व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल स्किन टाइप्स यस लेजर हर स्किन टाइप में हो सकता है अच्छा उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है विंटर्स में बिकॉज ड्राई हो जाती है स्किन का ऑयल निकलना नेचुरली कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द वेदर अराउंड दैट माइट बी द रीजन विच माइट पीपल माइट फील अ लिटिल स्ट्रेची हेंस आई ऑलवेज टेल देम कि 2 दिन लेजर से पहले एंड ऑफकोर्स आफ्टर 3 to 4 days आफ्टर लेजर यू हैव टू मॉइस्चराइज एंड ऑफकोर्स यूज अ सनस्क्रीन बट देर इज दिस मिथ इज टोटली अ मिथ कि मेरी स्किन ड्राई है मैं लेज़र नहीं करा सकती हूँ सर्टन बॉडी पार्ट्स पे नहीं करा सकती हूँ ऑफकोर्स हेयर टाइप हम डिफाइन करते हैं उसी के बाद हम लेज़र करते हैं बट it's not कि it will make your skin dry. Of course, in winters, if you don't moisturize, go in for a laser session, it might cause an issue. But if you take care of all these things, nothing happens. या बिकॉज मुझे भी पहले लग रहा था कि ड्राई होगी बट देन आफ्टर 2 दिन के बाद सब नॉर्मल था सो आई थिंक दैट्स अ गुड एडवाइस विच यू गिव मी एक और भी चीज़ दैट
ये लोग बहुत कहते हैं कि लेज़र कराने के बाद मतलब डॉक्टर्स बोल ज़रूर देते हैं पर शायद बाल वापस आते हैं. सो इज़ दैट ऑल्सो अ मिथ और इज़ इट ट्रू थिंग? क्या वो लाइट बाल आते हैं या रियलिस्टिक बाल वापस आ जाते हैं? क्योंकि पहले ही कोई इतनी मेहनत करके और हिम्मत करके एक लेज़र के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे और अगर आफ्टर 6 या 7 सेशन और व्हाटएवर इट कम्स बैक, then I think you feel discouraged. Agreed, of course. I mean, who would not? But then आपको understand करना है. Tell my patients in the first consultation कि हमारा endpoint एक soft patchy hair है. Coming back to your first question, एक living body में से एक number of cells कैसे निकाल सकते हो आप, right? तो आपका hair suppose per square surface area अगर आपके 30 hair आ रहे हैं तो मेरा एंड पॉइंट है कि 5 to 10 हेयर रह जाएंगे. अच्छा, ओके. सो नाउ व्हेन यू आर सीइंग योरसेल्फ इन द मिरर और इन योर सेल्फी, तो आपको जो बाल दिख रहे हैं दे आर द 30 ग्रुप ऑफ हेयर दैट यू आर सीइंग व्हिच आर बॉदरिंग यू. बट वही जब 2 रह जाएंगे ना इन दैट छोटा सा एरिया, दे विल नॉट बी इवन विजिबल. सो व्हेन यू द एंड पॉइंट इज दैट द डिस्टेंस दैट वी आर सिटिंग, यू विल नॉट बी एबल इवन टू सी के I mean, right now, if you see, can you see any hair on my face? No, absolutely not. Is what I'm saying. I've already taken 8 sessions. Okay. And I've had laser for my face. And by the end, the patients are unable to see. And I tell all my patients that can you notice any hair on my Actually, face? I really cannot because I thought that मेरे को लगता था कि पूरे बाल बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं. Then people don't have to even get their bleach done या कुछ भी. No, you don't have to because by the end बाल बहुत fine हो गया है. हाँ जी. वो इतना visible ही नहीं है. You know, so finer it is not visible. It is visible when it's thicker, the hair is Yes, more. yes. So we are basically irritates working you, on that. seeing So that black coming hair. back to your question, neither your time nor your money is wasted because हमने उस हेयर को इतना पतला कर दिया that it's not going to bother you. So I have a lot of patients asking me that when I wear a dress, I don't want to kind of remember कि वो मैंने वैक्स एंड शेव नहीं किया. आपको याद भी नहीं रहेगा. I mean, so many times after a party you will realize कि oh मैंने तो शेव भी नहीं किया था because it's not visible to you only. So that it really helps. Yes. एंड जस्ट एडिंग, क्योंकि आपने अभी वो बोला, क्योंकि ये भी एक मिथ है. समझ लीजिए अगर ठीक है आपके बाल पतले हो गए, इट्स वेरी थिन, लाइक फॉर मी ऑल्सो इट्स क्वाइट क्लियर, बट फॉर एग्जाम्पल इफ 1 or 2 hair comes, what should we do? Should we wax it? Should we shave it? Should we pluck it? What should we do? Just put a little cream and shave along the hair growth. So that's Nothing safe else. for ladies? That's totally safe. Okay. Now I know what you are thinking. You are thinking मैं shave करूँगी ना मेरे husband की तरह मेरी skin हो जाएगी, right? 100%, yes. The husband's shave thing, beard thing is because of his hormone, testosterone, Okay. right? Again, coming back, I have these male patients, some of them, who want to get their beard laser done, right? Oh, okay. Yes. तो उसमें क्या होता है जब हम beard laser करते हैं, beard shaping करते हैं, the hair actually goes down, right? क्योंकि हमने हेयर को फाइन कर दिया तो वो इतना नहीं दिख रहा है. बट उनका जो वो ग्रीन ह्यू आ रहा है या जो ब्लैक ह्यू आ रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ द हेयर. सो व्हेन वी थिन्ड योर हेयर एंड यू आर शेविंग इट, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. नॉट एट ऑल. Oh, you mean to say that what I had a problem of having a hue over my little chin side, that was because of the thick hair. Now Yes. that it's gone thinner, so it's clear. Yes. Exactly. Is that the equation? Yes, and I remember you thought it's pigmentation. हाँ जी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल. तो मतलब that's how it shows because Okay. female body is not supposed to have thicker hair, and when it comes, Okay. it shows like a pigmentation. Yeah. So, like just a last, like a curiosity question. Once you are done with it, आपने हमको clear कर दिया कि ठीक है 6 session के बाद Monica, now your hair are thin and all. What should we do after that? What's a post care of laser? Because that's maybe people go wrong. They get very free. Oh wow, हमारे बाल चले गए हैं. They'll get the facials done. बाल आया, कुछ भी करा लिया. So is it that? What should be the post care after laser? First, before getting your laser done, 7 days before and after, don't get any threading done. Acha. Don't get any facial done. If you also are seeing me for some other procedure, just give it a little break. Depending what we are doing. Like, so I picked up threading because majorly women get that done, right? Secondly, your sunscreen is a must. So I'm anyways taking some part of your hair away. We are shaving, तो कहीं से skin barrier भी break हुआ होगा. हाँ जी. So sunscreen is a definite must for everybody. Okay. बहुत dry skin type है तो pre हम moisturizer करेंगे, post हम moisturizer करेंगे. और कभी कभी हमें post laser भी we need moisturizer. So before sleeping we need some moisturizer for 3-4 days. We have to hold our skincare routine for another 3 to 4 days, which we are regularly doing, and then get back to that after 3 to 4 days.
Facials, all the parlor procedures, again you have to hold for at least 3-4 days. Okay. लगेगा आपको कुछ नहीं, but by the end your skin is going under metamorphosis, एक change हो रहा है, so there's no point in breaking that cycle. Yeah. So that means इसके बाद अपने facials भी करा सकते हैं. That's Of not course. that's safe. मतलब 3-4 दिन का break देके you can get it हाँ done. जी, हाँ जी, हाँ जी. Minimally with parlor procedures I give a gap of 7 days. Okay. हाँ जी, हाँ जी. But with your skincare routine or something that you're daily doing, वो you can start after 5 Which days. I'm also, you suggested me and हाँ I'm जी. quite doing a sunscreen which is a must. Sunscreen is a definite must. Yes. Always, yes. So I, as a doctor, like you always advise that rather than getting a bleach done, if you're upset with your hair and a growth or a thick hair, you should come for laser. It's Definitely. absolutely safe. Totally safe. We can start laser for girls who've attained their menarche, that's their period for the first time. तो Okay. जब period हो जाता है उसके 2 साल बाद से लेके I think 100 years of age, or there's no definition of age with respect to laser, हम कर सकते हैं. There's not a problem at all. And I think आपका भी सबसे पहले यही hindrance था कि मैं अब कराऊंगी मेरी skin खराब हो जाएगी, I'm aging, what if it will affect all those barriers. Correct. But laser, the beam is not going that deeper, so it definitely has a very good result. Because of course किसी को भी लगता है जैसे लेजर का नाम सुनते हैं ना तो सब डरते हैं कुछ पता नहीं कैसा कि प्रोसीजर कुछ होएगा. सिस्टमिक तो कुछ नहीं हो systemic, जाएगा. हाँ exactly, जी, exactly. कि मतलब आई विल हैव दीज साइड इफेक्ट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है. नथिंग एट ऑल. Thank you, Dr. Rubin. Thanks so much for all your advices and suggestions which you gave today, and taking my journey forward and knowing so much from Dr. Rubin. I would certainly suggest everyone to go ahead with laser, because if you look beautiful, I think that's the best encouragement any lady can have. So go ahead. It is absolutely safe. Thank you so much for all your suggestions, and must be healthy, must be sweet, and must be pretty. Thank you, everyone.